Welcome to this video. In this video, we are going to study about eigenvalues, eigenvector, characteristic polynomial, and diagonalizability of a matrix. Okay. In the previous lectures, we have studied about linear transformations T, and when this T is defined on a vector space V to V or V to itself, then this linear transformation is known as linear operator. So whenever we have a linear operator, then under some ordered basis beta, we can identify its matrix representation. Now, whenever we have a matrix A and this is similar to matrix B, then the concept related to the matrix, all these concepts are identical for both of these matrices A and B. Okay. Now, if you want to study some concept related to matrix and that matrix say we are in that sense अगर A और B सिमिलर है तो मैट्रिक्स से जुड़े हुए सारे जो कंसेप्ट है वो आइडेंटिकल होंगे A और B के लिए ठीक है सो अगर A इज आइडेंटिकल टू D where D इज सम डायगोनल मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस करना सबसे आसान है तो अगर किसी मेथड से इफ़ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट गिवन अ मैट्रिक्स इज डायगोनल देन इट्स स्टडी बिकम वेरी सिंपलर ओके तो क्योंकि हम ऑलरेडी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी में इस तरीके की मैट्रिक्स को पढ़ते आ रहे हैं तो ये जो मैट्रिक्स है इनकी स्टडी कब हमारे लिए आसान है जब ये मैट्रिक्स डायगोनलाइज हो या फिर हम ये कहें कि दिस मैट्रिक्स इज सिमिलर टू ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स तो हमने ये देखना है कि कब ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है और अगर डायगोनलाइजेबल है तो कौन सा ऑर्डर्ड बेसिस है जिसके लिए डायगोनलाइजेबल है क्या हम उस ऑर्डर्ड बेसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इसी सब बातों के पीछे हमारा ये लेक्चर रहने वाला है सो फॉर दिस लेक्चर वी हैव मोटिवेशन is first one is that does there exist an ordered basis and ordered basis beta for v is vector space okay such that the matrix representation T beta is a diagonal matrix the first one is this and the second says if such a basis exists then how can it be obtained so these are two motivation for us in the whole lecture we will study around these two questions okay so first of all let us identify the definition of diagonalizable operator कब हम किसी ऑपरेटर को डायगोनलाइजेबल बोलेंगे तो इसके लिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे so let us start with the definition and that definition is deal with diagonalizable operator diagonalizable linear operator so a linear operator T on finite dimensional vector space V is called diagonalizable if there is an ordered basis beta for V such that its matrix representation T in beta is diagonalizable matrix is a diagonal matrix so
suppose we have a linear operator T. So once we have a linear operator, then we can find its matrix representation. So if that matrix is diagonal, then we say that the linear transformation or linear operator T is diagonalizable. Okay. So we need to identify whether its matrix representation is a diagonal matrix or not. If so, then the linear operator is diagonalizable, otherwise not. Similarly, when what can say मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होगी if it's a linear operator linear if we represent this matrix as a linear operator, then that operator is diagonalizable. Okay, so we have a square matrix A is called diagonalizable if if we see as a linear operator. Okay, is diagonalizable. Okay, so this is how we can identify the definition. So अगर इस किसी भी linear operator का matrix representation diagonalizable है, so in that case we will say that linear operator is diagonalizable. Let us come to the second definition, and it say about definition, and it is about eigenvalue and eigenvector. Eigenvalue and eigenvector. So definition says let capital T be a linear operator on a vector space V, a non-zero vector V in V is called an eigenvector of T if there exists a scalar. This is the definition. Okay, there exists a scalar. The moment we say this lambda is a scalar, that means it is an element of field such that we have this one, T of V is equal to lambda times V, and this scalar lambda is called the eigenvalue corresponding to the eigenvector V. Okay, so this is about the definition. You can see जब भी हमारे पास आइगन वेक्टर का कंसेप्ट है, देन वी विल ऑलवेज कंसिडर अ नॉन जीरो वेक्टर ओनली. सो अ नॉन जीरो वेक्टर कैन बी आइगन वेक्टर ओनली. कभी भी जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर नहीं होगा, पहली चीज़. दूसरा ये कि आइगन वेक्टर हम कब बोलेंगे, जब भी हम टी ऑपरेटर इस पे लगाएं और ये कोई ना कोई वैल्यू ही तो आएगी, है ना. दिस इज द टी मेस इन वी हैव दिस सिनेरियो टी इज डिफाइंड फ्रॉम वी टू वी. So if we choose any element from this domain vector space and we identify its T maze, then that will be again an element of V itself. So that element is lambda time V. Now if we are having that suppose T of V is suppose W, then W equals to lambda V. और ये scenario हमें क्या बताता है, that this W is some constant or the scalar multiple of V. That means this V, W and V are LD elements. और जब भी LD elements है, that means linearly dependent है. इसका मतलब वो प्लेन में अगर
हम इनको ड्रॉ करें तो वो हमेशा एक लाइन पर ही रहेंगे। दैट मीन्स जब भी वी वांट टू आइडेंटिफाई आइगन वेक्टर, then we call a non-zero vector as the eigenvector of t if image of v and lambda v are identical for some not identical are collinear for some lambda. Okay, so if there exists some lambda for which t of v and lambda v are collinear, then this v is said to be eigenvector, and in that situation this lambda is the corresponding eigenvalue of this v vector. Okay, now we have another scenario where we define eigenvalue and eigenvector for a matrix. Okay, so for matrix हम किसी मैट्रिक्स ए के लिए किसी वेक्टर बी को कब हम आइगन वेक्टर बोलेंगे? सो लेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ एम एन क्रॉस एन ओवर द फील्ड एफ, then any vector. Okay, then a non-zero vector, a non-zero vector v in f, and this is column vector now, is called an eigenvector of a if v is a eigenvector, is an eigenvector of linear operator for a. That is, we have a v is same as lambda v for some lambda. Okay, belongs to f, and in that case this lambda is known as eigenvalue. Okay, so this lambda in field is known as eigenvalue corresponding to the eigenvector v. ओके, सो यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को डिफाइन किया है, एंड इन हियर वी हैव डिफाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फॉर अ लीनियर ऑपरेटर टी. नाउ